What's up, people? Kaisan ba? How are you all? I am good too, my love. I'm good too. Here you go with the link. तो क्या अगर मैं किसी ग्रुप पे मेरे भेजना रह गया हो तो आप प्लीज अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप पे भेज देंगे क्या? क्योंकि मुझे जितने पता है मैंने उतने तो ऐड कर दिए हैं. डन. डन. सेंट. बताओ मेरे शेरो, क्या हालचाल सब लोग के? व्हाट्सअप. सो पिछला पेपर पूरा अच्छे से अटेंड किया, अच्छा हुआ, समझ में आया सब कुछ? ये कौन है भाई? आकाशवाणी क्या बोल रहा है? तू खुद अपना डायलॉग तो देख ले. सर आपने परमानेंट लेंस लगाए नहीं, फिक्शनल फैनाटिक. हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे लास्ट से, और हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे. क्या मजे दोस्तों. पहले वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दैट्स वेरी 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 नेसेसरी. सॉर्टेड लग रहा है, कंट्रोल आ गया, बहुत ही बढ़िया. दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड. आई थिंक अच्छा ना, मतलब आई प्रोबेबली रेट्रोस्पेक्ट माय डे. जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट सेट माय स्क्रीन करेक्ट. या, that's it. Haji. So I retrospect my day, that the entire batch, what I did, how everything went and everything around. I think I am extremely overly satisfied with how this batch went. With this series, of course, this has been one of the nicest series I've ever done. So overly happy with how we are going ahead, and everything. It's like the perfect attempt. I feel this is the perfect golden attempt which I am watching. My involvement has been amazing. My availability has been too much. So everything said and done, this has been a very 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 good batch. होंगे शेष वापस से वो लाइव हो जाएंगे. श्रेया, पीवाईक्यू करने से बहुत हेल्प हो जाती है यार. पीवाईक्यू करने से डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाती है. सो अच्छा, ऑल एंड ऑल, नाउ there's this new announcement of mine which is coming for you all. Uh, so that has to be told to you before I start this and put up an end to this series. So this is the last paper I'm going to solve with you. मैंने जो आपको शेड्यूल में दिए थे, मैंने आपको दो पेपर्स शेड्यूल में दिए थे. So this second series is coming to an end, and my next series is coming up. I'm yet to design it and exactly announce the days and dates, and I have to set my time because that's also a very time consuming thing what I'm going to do for you. Firstly, post I've solved this paper, I want you guys to solve one paper more, that is June 24. आप उसको solve करिए. That should really help. One. Keep this light. Next up. Now I would be coming up with another series जो होगा let's predict December 2025.
and we had to give name to that series, and we had to give a nicer structure to that series. Probably Sunday ko baith ke I'm going to structure that series up. So let's predict 2025. I think the last problem what students really face in the ender cycle of their exams is they would want to um, you know revise quickly. Now they've done their second or third reading, they've attended marathon, they've seen past papers. Now what left, what more can the person do for getting successful? अब होता है यार सर, अब आता सब कुछ है, एक बार बस क्विक रिवीजन हो जाता ना तो आनंद आ जाता, मजा आ जाता. So let's predict December 2025 is going to be a series in which I am going to scroll page by page, page by page, page by page. In this page, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव मार्क कर लो. लास्ट टाइम इस जगह से ये क्वेश्चन आया था. क्वेश्चंस अपन ने सारे के सारे देख लिए, और उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज दोस टॉपिक्स इज वेल. मतलब क्विकली, जैसे मान लो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो मैं बोलूंगा देखो आर्टिकल 16 क्या है, सारे सिटीजन्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. 16(2) ने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेशन मत करना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम. 16(3) क्या बोलता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के फेवर में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन. मतलब माय पॉइंट इज 16(3) इज रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन, बट देन इस तरीके से मैं फास्ट 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 रिविजन कराता जाऊंगा फॉर योर क्विक डिस्पोजल. सो technically we'll be predicting your December 25, and at the same time we would be revising quickly each and every chapter with the most important topics जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में टर्न अप कर सकते हैं. कीपिंग दैट इन माइंड. कूल. सो लेट्स सी इफ प्रभु ने सब सही रखा और दिस वेंट वेल, तो अब जो मेरी नेक्स्ट सीरीज है वो कुछ इस लाइन पर आने वाली, जो मैंने आपको मैसेज में बोला था दैट आई एम गोइंग टू अनाउंस अनदर सीरीज. So let's finish up this today, and let's wait for another series until matlab that I am leaving India on 4th of December. Until then अपन सब कुछ कर देंगे जो भी बन पड़ सकता है. ठीक है, ओके, पधारो. हाँ हाँ, तीनों के लिए होगी. तन्वी, मतलब मुझे ऐसे अच्छा लगता है, बट नहीं ना हो सकता. Okay, let's start. Let me share the paper. कोमल, एक और सेशन भी होगा, और ये हम साथ साथ में अपलोड भी करने वाले हैं. वापस से 3-4 दिन में लाइव हो जाएगा. सर आप स्विस जा रहे हो? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्विस. आई एम गोइंग टू मतलब थाईलैंड के डिफरेंट वर्जन्स, बट नॉट दैट थाईलैंड. आई एम गोइंग टू go to Krabi, I'm going to go to Koh Samui, I'm going to go to Phuket, and then around. तो ऐसे 10-12 दिन के लिए. अब मुझे डिटॉक्स का टाइम से, तुम मेरी जान खा गए हो. थोड़े दिन अब दिखना मत, तुम पास होके मिलना डायरेक्ट. हाँ, शमिता, अभी तो पेपर सॉल्व करूंगा ना, आप ऐसा पूछोगे भी तो मैं क्या ही कर पाऊंगा अभी.
है ना? मसाज तो मैं हर जगह पे करवाऊंगा, समझ रहे हो क्या तुम? कोसुमे में भी, क्राबी में भी, फुकेत में भी, बैंकॉक में भी। आके बताता हूँ अच्छा कहाँ है। चलो, लेट्स स्टार्ट पीपल, लेट्स स्टार्ट, we're not going to waste more time. ओके, आज के पेपर की स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस करेंगे? आज हम क्वेश्चंस जंबल अप करेंगे, यानी कि जरूरी नहीं है कि मैं हर बार क्वेश्चन 1 से ही शुरू करूं। मेरे पास 15 मिनट रीडिंग का टाइम होता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली सही नहीं बन रहा है, तो आई कैन प्रॉब्ली ऑफ फॉर सम अनदर क्वेश्चन, आई कैन ऑफ फॉर समथिंग एल्स। जैसे इस बार क्वेश्चन 1 में एनआई भी आया था, जो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा वीक है, सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद एनआई, आई वांट टू स्टार्ट विद क्वेश्चन 2, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। व्हाट इज नॉट अलाउड कि आप क्वेश्चन 2 का ए करके क्वेश्चन 1 के बी का 1 नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारा गला घोट देना है ना? सो सेकंड चीज जो हमने को याद रखनी थी कि आप क्वेश्चन जंबल अप कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं तो चाहूंगा कि कभी भी जंबल अप ना ही करो तो बेहतर है, कभी भी जंबल अप ना ही करो तो बेहतर है, बट स्टिल इफ यू फील लाइक, आप कर सकते हो। सेकेंड, अगर आप जब आंसर लिख रहे हैं और आंसर लिखते 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 आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेसिफिकली की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आप स्पेसिफिकली की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं जिससे आपका एग्जामिनर इन की पॉइंट्स के ऊपर जंप करने लग जाए और वो आपकी लैंग्वेज को मिस करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे केसेस भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके लिए। सो टू थिंग्स यू टू टेक केयर। पहला, हम क्वेश्चन जंबल अप कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी कि 1 2 3 4 5 6 करें। क्वेश्चन 2, अगर कोई भी आंसर आपने लिखा है एंड यू थिंक कि आप इसके की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल कि ये हाईलाइट करो, हाईलाइट मत करो। आप वो चीज हाईलाइट करते हो जिससे उस पूरे पॉइंट का अर्थ सामने आ जाए। बट याद रखना, हाईलाइट करने से टाइम जाता है, ठीक है ना? सो पेपर पे आंख रखना, टाइम पर आंख रखना। ऐसा ना हो जाए कि हाईलाइट करने के चक्कर में तुम हाईलाइट हो जाओ कि एक बच्चा था जिसने पहले 50 नंबर ऐसा लिखा कि उसको 50 में से 39 आए, बाकी के 50 वो तो लिखा ही नहीं। ये मत करके आना, ठीक है? हाँ जी, अंडरलाइन करना है पेन से, राइट? डन। चलिए, नाउ रजिस्टर रेडी, we'll start with question 2 first today, ठीक है? चलो रजिस्टर रेडी करो और ताबड़तोड़ लिखना शुरू करो इश्क मोहब्बत के साथ। लेट्स फिनिश दिस पेपर अ बिट अर्ली, लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस पेपर अ बिट अर्ली। थोड़ा सा ऑन पॉइंट लिखेंगे, हल्के से आंसर्स को शॉर्टन अप करेंगे और पेपर जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेट अस स्टार्ट, 3 2 1 एक्शन। एक सेकंड, क्वेश्चन तो साथ में डिस्कस कर ही सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन 2 ए, नहीं मैंडेटरी नहीं होता दोस्तों, मेरा सजेशन है। अंडरलाइन करना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होता ना। डिस्कसिंग द केस ऑफ रेलिन वर्सेस फ्लेचर, स्टेट द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है? रेयांश एक लार्ज वेल मेंटेन कुत्ता अपने पास रखता है इन अ सिक्योर्ड kennel in Reyan's backyard. The kennel has a gate which is generally locked and a high fence to ensure that the dog does not escape. One day, Vedant, a neighbor, climbs over the fence and opens the kennel gate, allowing the dog to run free. दिखा दी औकात वेदांत ने। The dog then bites Karthik, another neighbor who was walking by. Karthik files a suit for damage against Reyansh under the law of tort. Is Reyansh liable for the damages under the rule of strict liability? See, technically, this case falls under exception to strict liability. Act of stranger, ये एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर का केस हो जाएगा। तो एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स के केस में you don't have to really pay the compensation because this could not have been predicted, and रेयांश ने अपनी तरफ से वो हर मेजर लिया था जो कोई भी व्यक्ति लेता, and this was unforeseeable कि कोई ऐसा करेगा कि जाकर गेट ओपन कर देगा। सो नो, रेयांश इज नॉट गोइंग टू बी लायबल, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस में आ जाएगा, ओके? सेकेंड है, महेंद्र is an accused in a high profile murder case. The investigating authority wants to conduct narco test. Oh,
without his consent, narco test कर रहे हैं but without his consent to obtain evidence against him. Mahindra's advocate argues that the use of this test violates his fundamental right. हाँ violate कर रहा है. Article 20 sub article 1 protection against self incrimination, sorry 20 sub article 3 कि आप मेरे को खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते. With reference to Selvi versus State of Karnataka, discuss as to whether the use of narco test on Mahindra without his consent constitutes a violation of fundamental right. Yes, it does. Article 20 सबको ही अवेलेबल है. It's right available to every person. किसी को भी फोर्सफुली अपने खिलाफ विटनेस नहीं दिलवाई जा सकती. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. और तीसरा है, A filed a suit against B in 2019 claiming that B had wrongfully evicted him from a property. The court in the judgment in 2021, ठीक है, 19 में केस हुआ, 21 में जजमेंट आया बी के फेवर में. ए ने फाइल किया था, ठीक है, मालिक के फेवर में जजमेंट आया स्टेटिंग कि जो इविक्शन है वो लॉफुल है और ए का क्लेम डिसमिस कर दिया. 2023 में ए ने वापस से नया सूट फाइल किया है ऑन द सेम ग्राउंड. हो ही नहीं सकता. रेस जुडिकाटा, सीकिंग टू रीओपन द केस. बी आर्ग्यूज कि जो न्यू सूट है वो बार्ड है बाय सीपीसी. What are the requirements for applicability of the principle of res judicata? Section 11 to be precise. चलो, तो क्वेश्चन 2 के अपन ने तीनों क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. 15 नंबर हमारे हाथ में, ये तो ऐसे ही बन जाएगा. ठीक है बेटे लोग, चलो फट लिखेंगे. झटपट फटाफट, लक्ष्मी जी घर के अंदर, झटपट फटाफट. दो मिनट दोस्त, 2 मिनट, मेरी स्क्रीन हैंग हो रही थी. अभी स्क्रीन मूव कर रही है दोस्तों, स्क्रीन मूव कर रही है, 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. परफेक्ट, आ जाओ. कभी भी पहले हमेशा इंट्रोडक्शन. अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, in some cases, under the law of tort, in some cases the defendant is held liable even without mistake on his part for any loss
First to the plaintiff. This is known as the strict liability rule. Further, to the apply the strict liability rule, the following conditions were given in Reed versus Lyons. First, non-natural use of land. दूसरा, escape. However, there are certain exceptions to the above rule, which are A. Natural use of land. B. Act of God. C. Act of stranger. D. Natural use of land हो गया, act of God हो गया, act of stranger हो गया, consent of plaintiff, mistake of plaintiff. In the given case, Reyansh, Reyansh took all the safeguards to fence and stop the dog from escaping, but this was an act of stranger, that is Panthav, that is Vedant. Which could not have been predicted. Hence, Reyansh can claim immunity from strict liability, last point, but to claim immunity
from strict liability the rule is that the defendant took all reasonable care and the act of stranger could not have been predicted. Both the conditions are present here, hence Riyansh will not be liable. बोलो शेरो, पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। आई थिंक ये आपका 1.25 पेज में हो गया होगा लिख के। सवा पेज में हो गया होगा ये लिख के आपका। ठीक है, रेलन केस क्यों डिस्कस कर रहे हो? चाहिए तो थोड़ा बहुत और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बता दो, पर यहां पर तो नहीं है जरूरत। एक पेज में हो गया, चलो। The given case comes under the provision of Article 20, Sub-Article 3 of Constitution यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, इससे ज्यादा नहीं। तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 of the Constitution which states that no accused shall be forced to become a witness against himself. To become a witness against himself. But for the applicability of the above, the following conditions
must be fulfilled. The person must be an accused. B. There must be a compulsion to become witness. Such witness goes against the accused. पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर प्रोविजन लिखा. अब इसको कंपेयर करने का टाइम आ गया है. In the present case, the investigating authorities wants to conduct narco-analysis test without the consent of the accused, that is Mahendra, is a clear violation of his fundamental right under Article 20, Sub-Article 3. The same was stated in Selvi versus State of Karnataka, that Article 20, Sub-Article 3 protects an accused from self-incrimination and it also allows him to refrain from any question which might expose him to criminal charges. ठीक है, फर्स्ट तो हो गया. Is the right available to all the person? Yes. This right is available to all the persons
whether citizens or non-citizens. Sir, what if the case appears in question and we don't know about the facts? Like in this question, I'm unaware of this case law. क्योंकि इस case law का facts मुझे भी नहीं पता. मैंने ऐसे ही बनाया है. मतलब I'm believing कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यही बोला होगा. मतलब क्योंकि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 वो खुद ही लिख कर दे रहे हैं कि उस केस में ये बोला गया है. तो अपन ने तो खाली रिपीट ही किया. जो मेरा ऊपर वाला प्रोविजन था मैंने वापस से रिपीट कर दिया. मुझे भी नहीं पता है सही से केस. ठीक है, डन है. ये केस का नाम याद नहीं करना था. क्वेश्चन में देता गवार. अंधो पढ़ो तो सही क्या लिखा है. विथ रेफरेंस टू सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. चलो आ जाओ, तीसरा बढ़ाते हैं. If a suit be अच्छा इसमें डिस्कस कर लें. wrongfully evicted res judicata क्वेश्चन है. What are the requirements for applicability of principle of res judicata? ठीक है. कभी भी डायरेक्ट केस से नहीं, अपन अपने प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वील गो टू द केस. As per section 11 of the CPC. देखो मैंने कॉमा कहाँ लगाया. जब मैंने पूरा सेक्शन कोड कर लिया फिर कॉमा. नो कोड. shall try any suit the matter in which is directly same in a former suit and between the same parties. And that former suit and that former suit has been heard and decided by the court. Has been decided by the court. However, to apply this doctrine, the following requirements must be met. The matter in the former suit and the present suit is
directly and substantially same. The former suit was also between the same parties. C. Such suit has been heard and finally decided. This is not an absolute rule of justice, rather, is a rule of convenience. Of convenience, and is based on the premise that there must be an end to litigation. There must be an end to litigation. कंक्लूजन का टाइम आ गया है. In the given case, Mr. A had filed a suit in 2019. 2019 21 में decide होता है, which was heard and finally decided in 2021 in favor of B. Then and there, the rule of res judicata applies, and the second suit on similar grounds between same parties cannot be proceeded hence Mr. B's argument is valid and the suit is liable to be dismissed. खत्म. क्या बोलते?
जमा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. डन. अच्छा देखो, अंडरलाइन बाद में करेंगे. टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा नहीं करेंगे. अभी बैठ के अंडरलाइन करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो पेपर ना छूट जाए. तो अगर आखिरी में 5 7 8 मिनट बचे, अंडरलाइन करेंगे, नहीं बचा जैसे आराम, कोई बात. ठीक है. ठीक है निधि, आई विल, बट एज ऑफ नाउ हम पेपर की स्पीड पे हैं. और लिमिटेशन एक्ट में आपके पास इमूल प्रॉपर्टी के केसेस में 12 महीने का टाइम होता है, 12 साल का टाइम होता है. आ जाओ, क्वेश्चन 3 देख ले. पहले क्वेश्चन 3 कर लेंगे. A is the owner of a field. He decides to sell it to B. There is a right of a way from the field that A has knowledge of, but okay. Can the contract be rescinded by B? What are the conditions the court में rescind? ठीक है. Specific relief act है. ऐसा रहे, आपने लेनी है. 3A नहीं करना अपने को. Specific relief act है. Aman and Manish have a dispute regarding possession of an immovable property. The dispute arose when Aman was 8 years old. Aman wants to file a suit for the recovery of possession of immovable property against Manish. The Limitation Act specifies limitation period of 12 years for the recovery of possession in such disputes. However, since Aman was a minor when the limitation period commenced, how much time does he have to file a suit after the cessation of minority under the Limitation Act? Explain. Section 678. I hope आपको 678 याद होगा. Disability at the commencement. याद है क्या? Disability was at the commencement, hence the time would not start running. 7 अपने को यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है. 7 खाली सप्लीमेंट करता है अगर मल्टीपल लोग साथ में हो तो आपका लिमिटेशन पीरियड तब तक चालू नहीं होता जब तक ये लोग केपेबल हो जाए टू फाइल अ सूट. और 8 कंट्रोल करता है 6 और 7 को, जो ये कहता है कि भैया जब ये लिमिटेशन पीरियड हम लोग इनको देंगे तो हम इनको ज्यादा से ज्यादा 3 साल देंगे नया टाइम, उससे ज्यादा नहीं देंगे. याद आ रहा है? 6 7 8. बहुत ही बढ़िया शेरो. तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो अपन बना लेंगे. 7 में पूछ लिया सालों ने, मैं बोल रहा था 7 नहीं लिखेंगे. इन लोगों ने लिख दिया व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ जॉइंट एंटाइटलमेंट ऑफ फाइलिंग अ सूट और एप्लीकेशन. 6 7 8 तीनों ही बताना. अ पब्लिक अथॉरिटी रिसीव्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन डिमांडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड. ओहो, चाहता तो डायरेक्ट रिजेक्शन भी ले सकता था. भाई की मस्ती तो देखो. हाँ जी. सो strategically placed troops जानने उसको. Related information when the country was at war with one of its neighboring countries. The authority denied as it belonged to a category of exempted information. Discuss whether the authority could deny such information with respect to relevant. Yes, it can. Exempted information है ना. ऐसे कोई भी डिस्क्लोजर्स जो किसी की सेफ्टी या फिर ऐसे कोई भी डिस्क्लोजर्स जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री पेपर्स की बात करते हैं, दे कैन बी रिफ्यूज्ड. हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे. ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज आती है. ठीक है. So we're going to go with these 3 questions again. 3 ABC. Let's start. चले. 3A नहीं लिखना है, 3B लिखना है अपने को. The given case pertains with the provisions
of section 6, 7, 8 of Limitation Act 1963, which have to be read together, which have to be read together. As per section 6, as per section 6, whenever at the start of limitation period, if a party is under any legal disability, a party is under any legal disability, like minority or insanity, comma, then the period of limitation shall not commence. Further, under section 7, it provides for the application of above rule. It provides for the application of above rule, but on joint entitlement, that is, when there are two or more parties. There are two situations under section 7. A, where without the concurrence of the person under disability, where without the concurrence of the person under disability, the case can be proceeded, then time will not stop. Then time will not stop. B, when discharge cannot be given without all parties concurrence, then time will not start against any of them. Oh. Further, section 8
controls section 6 and 7 and states that the fresh period of limitation to those obtaining concession under section 6 or 7 cannot exceed 3 years. So the original limitation period or 3 years, whichever is lower. In the present case, Aman, at the commencement of limitation period, was a minor, hence by virtue of section 6, his limitation period will not start. However, the limitation period after cessation of disability would be 3 years and not 12 years. बोलो मेरे शेरों, समझा क्या? अब कुछ में सेक्शन नहीं भी लिखेंगे, ये एकदम क्लियर है दोस्तों? एग्जेम्प्टेड वाला है। समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ गलती करते थे तुम लोग? थोड़ी क्लैरिटी आ रही है? Under the RTI Act 2005, following categories of information has been exempted
from disclosure. A. Yes, fictional. A. Disclosure which prejudicially affects the sovereignty and integrity of India. Disclosure would be considered as a breach of privilege of parliament or state. Disclosures which are protected by IPR laws or are trade secrets which may harm the competitive position. Disclosures which are forbidden by any court or tribunal. Disclosures which endangers life and physical safety of any person or any confidential source. एक और शब्द लिख सकते हो कैबिनेट पेपर्स क्योंकि किसी बच्चे ने कैबिनेट पेपर्स ठीक है 5 4 हो गए ना ना so in the given case
the information about strategically placed troops. वैसे आपको इसका सेक्शन याद था क्या? And related information at the time of war. At the time of war, वैसे सेक्शन 8 है. Is against the sovereignty and integrity of India, as well as will endanger the life or physical safety of the troops. Hence, the denial of authority to provide information is completely justified and permissible. Section 8 is correct. Perfect. यार बच्चे तुम कैसे लिखते हो यार? मैं तो फोरम बन जाएगा यार. जी, बढ़ेंगे आगे. ठीक है. हाँ जी, मस्त पंप आ गया ना. सर कुछ दिन जवाब भाई जिम तो जाना पड़ेगा, ऐसे काहे करते हो यार. ठीक है. क्वेश्चन 4 करेंगे. ऑप्शनल है. ठीक है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर had a legal obligation to provide clean drinking water to its residents as per MP Act. ठीक है. However, for the past 6 months, the residents of Ward 12 have been complaining about the lack of clean drinking water. Despite repeated complaints to the municipal authorities, no action has been taken.
Patel, a resident, decides to take legal action. He wants to file a writ in Madhya Pradesh High Court to compel. Okay, mandamus मांग रहे हैं. What type of writ is he asking? Obviously, mandamus. We command. What do you mean by joint venture? JV foreign collaboration. ये एसबीआई का क्वेश्चन यहाँ का डाल दिया. ठीक है, ये वाला अपने को नहीं आता है. What is the purpose of SPDI, मतलब Digital Personal Data Protection Act? What are the key information of Section 3 regarding applicability and non-applicability? ठीक है. X is an individual while blogging her views. उसने अपनी information public है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं. अगर उसने अपना डेटा ऑलरेडी पब्लिक कर रखा है तो इट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर सेंसिटिव पर्सनल डेटा. तो यहाँ पर अपने को दो क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं आता है. नीचे देख लेते हैं, फिर सेलेक्ट करेंगे तीनों में से क्या करना है. Ravi had long-standing grudge against Govind. Out of spite, Ravi had falsely accused Govind of theft. Based on Ravi's false report, criminal proceedings were initiated against Govind. During the trial, the court found that the allegations were baseless and subsequently acquitted Govind. After acquittal, what remedy Govind has? आय हाय हाय, ये तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का है. Malicious prosecution. ठीक है. ठीक है, ये आता है अपने को. डिफाइन द टर्म मीडिएशन भी हो जाएगा और मीडिएटर भी हो जाएगा. डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत ही बढ़िया. डिस्टिंग्विश ये भी अपने को आता है. Difference between arbitration and mediation. The general rule is that the opinion of witness on a question is irrelevant. ये आंसर मैंने पिछली बार भी लिखा है आपको. ठीक है बाबू, डेफमेशन से अच्छा मलिशियस प्रोसिक्यूशन है ना. However, there are some exceptions. Okay, exceptions to the rule of when opinion of a third party is valid. तो ऑब्वियसली मेरे सारे बच्चों ने 4A ही किया होगा, ऑब्वियसली मैं भी 4A ही करने वाला हूं. This is much simpler to attempt. This is much simpler to attempt. Let's start. In the given case, Mr. Mr. Govind has a remedy of filing a suit of malicious prosecution against Mr. Ravi. Under law of torts, malicious prosecution means instigating a judicial proceeding
against any person without any reasonable cause and such case terminates in the favor of another resulting into damage to his reputation or property. मैंने आपको बताया था कि इसमें डायग्राम बनाना. There's a question, there's a question, there's a question. सर आपने कहा था कि डायरेक्ट आंसर फर्स्ट पॉइंट में नहीं ले. आंसर क्या है? यस नो, ऐसा थोड़ी है. पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर यस नो थोड़ी है. यहां पर उसने पूछा कि वो क्या एक्शन ले सकता है. आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स मलिशियस प्रोसिक्यूशन, मतलब यहां से स्टार्ट कर सकते थे और बाद में ही लिख लेते. I started with the given case Mr. Govind has a remedy of filing a suit of malicious prosecution against Mr. Ravi. अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स malicious prosecution क्या होता है? इसमें यस नो नहीं है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा कोई रेमेडी ही नहीं है ना, मतलब देयर कैन नॉट बी अनदर आंसर टू दिस. Following are the essential elements. A. There must have been a prosecution of plaintiff by the defendant there was want of reasonable cause in that previous prosecution. C. The defendant acted maliciously the case was terminated in favor of plaintiff plaintiff must have suffered damages as a result of the prosecution. So in the given case, all the essentials of malicious prosecution
are present. Hence, the appropriate remedy for Govind would be filing a suit of malicious prosecution. बोलो मेरे शुरू. नहीं, पक्षी. Mediation is a process whereby attempt is made by the parties to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of a third party, that is mediator. Mediator is any person who has been appointed to provide mediation service or to conduct mediation in order to bring the disputants to an acceptable settlement. This is the distinguish between arbitration and mediation. However,
mediation is different from however mediation is different from arbitration and has the following differences. अच्छा, at this juncture आप चाहे तो आपके डिफरेंसेस को अगर क्रिस्प है तो टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर क्रिस्प नहीं है तो आप पॉइंटर फॉर्म्स में भी लिख सकते हो। तो कभी भी याद रखना दोनों की दोनों चीजें अलाउड होती है आपको लिखना, ठीक है। तो आप कॉलम बना के भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। आई विल मेक पॉइंटर्स। देखो पॉइंटर्स कैसे बनते हैं। आर्बिट्रेशन is more like litigation which is done outside the court, resulting into an award, whereas in mediation the parties are brought to a mutually agreeable solution. Arbitration is more formal in nature as against mediation, which is quite informal. The result of arbitration will always be a binding arbitral award, whereas result of mediation will always be a settlement if agreed by the parties. Arbitration is controlled by the arbitrator
whereas mediation is in the hands of parties. That is, if they accept the terms of settlement. वैसे तो बहुत एक और लिख सकते हो. Mediation is collaborative, whereas arbitration is adversarial. Adversarial मतलब इसमें punishment आएगी. लिख सकते हो ना, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी पॉइंट्स ऐड कर दो, इतना क्या है इसमें. लिख लिया भाई लोग. चलो एक 4A3 लिख लें क्या, या पहले एक मिनट एक सूसू ब्रेक ले, बहुत जोर से आ रही है, तो 1 मिनट दो, आई बी बैक. और 4A3 लिखते हैं उसके बाद. अगर तब तक किसी का कुछ लिखना रह गया हो तो आप वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं. आई बी बैक इन अ मिनट. चलो let's start writing. Ready? The general rule is that opinion of a witness on a question
whether of fact or of law is irrelevant. However, there are some exceptions to the general rule. Although आंसर अपने लिख लिया, but ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट है, तो अपन ये भी लिख ही लेते हैं. The general rule is that evidence must, in all cases, be direct, and anything heard about the same or any opinion upon the same is treated as hearsay and are irrelevant. However, to this rule, there are certain exceptions which make there are certain exceptions which make opinions or other testimony मतलब गवाही, relevant. These are A. सबसे पहला तो सबसे अच्छा है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. Opinion of expert. Opinion of expert are relevant in the following cases. Opinion as to handwriting, opinion about finger impression, opinion on any foreign law, opinion upon any custom, art, science. ये सारे opinions matter करते हैं. B. Opinion of a person who is not an expert may also
be relevant opinion as to handwriting. तुम लोग opinion as to handwriting of a person if the person giving opinion is well acquainted with the handwriting opinion as to any customs or usages by a person likely to be aware of such custom. Opinion about the use of certain words in a particular district मैंने ना यार यहाँ पर आते ही हमारी एक क्या बोलते हैं स्टूडेंट है शिवानी उसको बुला रहे शिविद्रा तो उसने बोला कि सर है ना शिवी मत बोलो मेरे को हमारे महाराष्ट्र में शिवी का मतलब कुछ और होता है क्या होता है शिवी का मतलब एनीवन महाराष्ट्र से कोई है क्या शिवी मतलब क्या ठीक है ओपिनियन हो गया एक्सपर्ट हो गया वाज नॉट एन एक्सपर्ट हो गया ठीक है एक दो नॉन कोरोबरेटिंग डाल देता है अच्छा शिवी गाली होती है क्या ओके नाउ यू गॉट द मीनिंग जो लास्ट वाले पॉइंट का मतलब facts which support or are inconsistent with the person giving opinion are also relevant खत्म यस शेरो डन है शिवी का मतलब गाली होता है क्या ओके यू गॉट द लॉजिक जो मैं पॉइंट लिख रहा था उसका मतलब समझा ठीक है पानी है हो जाएगा
गुड टू गो? हो गया। क्वेश्चन 5 करेंगे पहले। ये क्वेश्चन 1 करे क्या यार? बहुत देर से 1 ही नहीं किया। पहले क्वेश्चंस देख लो। राम बाय डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर मीरा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। राम ने गिफ्ट दिया बेटी मीरा को, डायरेक्टिंग हर कि वो एन्युटी देगी राम के भाई को राज को, जो वो खुद करता है। चुनैया वर्सेस रमैया। On the same day, Meera executed in writing in favor of donor's brother, agreeing to pay the annuity. 6 months later, Meera stopped the payment and Raj files a civil suit. हेलो हेलो। हाँ जी। जी सर मैं भी एक लेक्चर में, आप मुझे 2 घंटे फोन लगाएंगे? 6 months later, Meera stops the payment. Raj files a civil suit. Meera claimed that because no consideration has moved from Raj to her, there is no binding contract between them. Yes. कोल्ड कॉफी है वो। अच्छा, इसमें तो अपने को कोई ऊपर का पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा। The general rule is that agreement made without consideration is void, but Section 25 lays down certain exceptions, which makes a promise without consideration valid and binding. Section 25 याद है क्या? 5 exceptions है। Out of natural love and affection, agency, time bar, debt, कुछ याद आ रहा है? Alex promises to donate 10,000. Alex to a local animal shelter for their new facility. However, when the shelter requests donation, Alex refuses to pay. Can the management of animal shelter take legal action against Alex to enforce his promise? No. It's a gratuitous promise, cannot be binding. However, अगर मैनेजमेंट ने इसके नाम पर खर्चा कर दिया होता तो एलेक्स की लाइबिलिटी आ सकती थी. What would be the answer if the management of the shelter home had initiated some work? अगर कर दिया होता काम तो पैसे दे सकते थे. D supplied tires to wholesale X on a condition that any retailer to whom X resupplied the tires, ये Dunlop tires वाला केस है, the retailer would promise X not to sell them to the public below D's price list. Privity of contract. याद है क्या privity of contract? X ने F को टायर सप्लाई किए इसी कंडीशन पे, पर F ने फिर भी सेल किया below D's price list. Discuss the legality of the case if D claims any damages from. नहीं, X F पर केस नहीं कर सकता, X F पर केस नहीं कर सकता. D, I'm so sorry, D supplied tires to wholesaler X. D केस नहीं कर सकता F पे, X कर सकता है, D नहीं कर सकता क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन. The Indian law recognizes 3 kinds of consideration, but English में 2 होते हैं, present, past, future. English में past consideration is no consideration. Wow. So 10 के 10 नंबर विदाउट पैसेज भी पढ़े किए जा सकते हैं. कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन पैसेज से नहीं है ना? स्टिल आई गिव यू टाइम, 1 मिनट में ले लो, जल्दी से क्वेश्चन देख लो, आपके मन में सुकून रहेगा. बट कुछ काम करिए.
डन है सर। लास्ट आंसर का लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन है। अभी क्वेश्चन पढ़ ले यार। आई विल गिव यू टाइम। सही है। चलो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़े मत कर देना। In the present case, Mr. Ram gave a property to her daughter Meera, and in return required her to pay annuity to his brother, which she agreed, but later, after 6 months, denied on the ground that no consideration moved from Mr. As per section 2D, as per section 2D, when at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person does or abstains from doing certain thing, it is called consideration. The above
definition proves that in India there is no privity to consideration. There's no privity to consideration, and it may from any person. In the given case, इन्होंने चुने वैसे तो मैं तो नहीं पूछना. In the given case, consideration by Mr. Ram on behalf of his brother is sufficient consideration and Mira cannot stop annuity by stating that no consideration moved from Mr. Raj. Similar case was seen in Chennai versus Ramaya, where the court decreed that in India there is no privity to consideration. In India, there is no privity to consideration. Let's move to the next question. The general rule is that an agreement made without consideration is void, but Section 25 lays down certain exceptions which makes a promise without consideration. इस बार नंबरिंग गलत कर रहे हैं. The general rule is that every agreement must be supported by valid consideration. Else there is no agreement. However, to the above, following are the exceptions provided under Section 25. A. A promise
to pay a time barred debt, provided it is in writing and signed by the person or his agent. Agreement out of natural law between parties standing in near relation, between parties standing in near relation, if it is in writing and registered. Gift, in this case, nearness of relation is not required. Contract of agency, agreement made to compensate someone for his past voluntary services. हम्म, क्लियर है? काशी क्या करे, अब जितना बनता है उतना तो लिखना ही पड़ेगा ना. वन एट थ्री. अब क्या है 183 में? एलेक्स ने प्रॉमिस किया था. In the given case, the promise made by Alex to pay 10,000 for charity is a gratuitous promise which cannot be enforced against him. Second, however, if the management of the shelter home
initiated some work on the basis of the promise and if Alex was aware of the same, then he would be liable to pay. Since in this case, no transaction was initiated by the management, hence a gratuitous promise cannot be enforced against Alex. Done. Under the Contract Act 1872, there is a principle of privity to contract. That is, a stranger to a contract cannot sue. Cannot sue. Even if that is for his benefit. In the given case, there are two contracts. First contract between D and X stating not to sell below the prescribed price. B. Second, between X and F, wherein X provided similar condition upon F. In the given case, breach
is done by F. Hence, going by privity of contract, X can file a suit for compensation, but Mr. D has no right of compensation against F. क्या बोलती पब्लिक? सर थर्ड में सेकंड पार्ट भी है. व्हाट इफ द मैनेजमेंट हैड इनिशिएटेड सर्टेन वर्क, तो लिखा तो है. However, if the management of the shelter home initiated some work on the basis of the promise and if Alex was aware of the same, then it would be liable to pay. Since in this case no transaction was initiated by the management, hence the gratuitous promise cannot be enforced against Alex. ठीक है. ये तो बहुत ही खुद. The Indian law recognizes three kinds of consideration, but the English law recognizes only two. Under the Indian law, that is Indian Contract Act 1872, consideration can be of three kinds. Executed, that is present. हाय, इतनी खुश क्यों है अभी? जैसे ही दरवाजा खोला पापा पापा. उसने देखा भी नहीं आपको, फिर भी उसने बोला पापा. लो भाई 1 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, अपने हाथ को आराम दो. ला से अच्छा इधर आजा 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 आजा. ओह अच्छा. पापा पापा. तेरे पाँव कितने ठंडे हो रहे हैं. नहीं, अभी मैंने उसको पैर धुलाए, बाहर मिट्टी में खेल रही थी. एक मिनट रुको, चलो सबको टिंग टिंग कर दो. हाँ हाँ, ये बेस्ट फॉर्मेट है. टिंग टिंग टिंग. चलो वापस करके दिखाओ, वापस करके दिखाओ, वापस करके दिखाओ एक बार. टिंग 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 टिंग. अच्छा सबको एक बार पैट दिखाओ, मुंह का मुंह का मुंह. हम्म. पापा बेचारी आज सुबह से काम कर रही है ना, थक गई है. बाहर अभी मिट्टी में खेल के आई, 2 दिन पत्थर खा के आई.
2-3 पत्थर खा के आई, मिट्टी में खेल के आई। चलो, सब ठीक है एकदम, रेस्ट रिलैक्स। मम्मम पीना है? ये वाला पी। चल अच्छा, कॉफी पी ले। ये छेड़े से ना प्यास लगी उन्होंने सुना फिर पानी पिया है। पानी बॉटल से पिलाओ। हाँ पीती है वो। अरे यार, एक गिरा देगी मधु। वो पिंक वाले कैप में पिलाओ उसको। इसमें नहीं, पिंक वाले कैप में पिएगी। एक सेकंड। हाँ हाँ, पिला रहा हूँ, 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 धीरे। बस। चल भाग जा। पानी पी लिया तूने? अब जा, हमको पेपर करने दे। आजा बेटो ना। आजा चले। नहीं। नो 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 नो। चलो जाओ, बाय। 3 2 1, Billy's going. Jugu jugu. चलो 3 2 1 गो। पानी पड़ के पिट्ठी थी गए। बाय बाय, टाटा। बाय बाय। चल सो जा, दांत आ रहे तेरे टेढ़ी। हाँ 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 हाँ। चल ले जा, ले जा। माँ रही रखी मसेरी चुम्बी बेटा चेक करा में। हेलो हेलो। मैं मैराथन इसमें हूँ, आंसर राइटिंग सेशन में हूँ, घंटे पर में लगाना मेरे को। So executed, that is present. चलो चलो चलो, फट 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 लिखते चलो। Executed, that is present, in which both the parties, in which both the parties have performed their part. B. Executory, that is future, where either of the party, where either of the party or both the parties are yet to perform its part. And C is past consideration, wherein the act constituting consideration took place in past and was complete even before the promise.
India recognizes all the above forms of consideration. India recognizes all the above form of consideration, but in English law, consideration may be executed or executory, but it can never be passed. So technically, past consideration is no consideration. Past consideration is no consideration. Done. This completes your 1A, that is your 10 marks, and then you have to go for another, that is a 1B. ये NI Act के हिसाब से है. Penalties for dishonor of the check. Penalty for dishonor of check याद है क्या? ये भी अपन ने पिछले पेपर में सॉल्व किया है. 2 years of imprisonment or twice of the amount. The amendment have provided drawer with more time to send notice, punishment for the offence, more stringent, power to condone delay, the ability of government nominated directors. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर. बेकार, दोनों ही पैसेज बेकार है. दोनों बेकार है. Okay. In reference to the above statement, answer the following question. Mahesh bhai hai, he has drawn a check of 25,000 on his own account payable to Mukesh, but only has 20,000 in his account. शाबाश महेश, शाबाश. इसीलिए हम महेश को बचा ना सके. अच्छा, मुकेश नहीं बचा था, सॉरी. Mukesh presents the same to the bank after 6 months. शाबाश मुकेश, शाबाश. Stale हो गया check from the date on which it was drawn. The check bounced due to insufficient fund in Mahesh's account. Explain the legality of his claim with 138. नहीं आएगा. 138 में क्लेम करने के लिए it should be a payment made to pay off some debt. वो यहाँ पर प्रेजेंट है. And it should be duly presented in front of the court too. बाउंस होने के बाद आपको उसको 30 दिन का नोटिस देना है और 30 दिन के अंदर उसको 15 दिन के अंदर पे करना है. अगर ये नहीं होता है तो आप 138 में क्लेम करते हैं. यहां पर इसने चेक ही स्टेल कर दिया, 6 महीने हो गए. सो द पॉइंट इज द केस इज गॉन. ये स्टेल चेक का केस है, इसलिए 138 में मुकेश महेश पे केस नहीं कर पाएगा. सेकेंड है एस, हु वाज अ डायरेक्टर ऑफ R&D कंपनी, issued a check in favor of G Associates for the discharge of his debt. S एक डायरेक्टर है कंपनी का जिसने एक चेक काटा है G के लिए. ओके. The check was returned by the bank unpaid because the amount of money standing to the credit of the account was insufficient to honor the check. State whether S is liable. हाँ, S liable होगा. 141 मतलब dishonor of check only. 141 is dishonor of check only. बस इस बार dishonor of check किसका हुआ है? By a company. तो अगर कंपनी का चेक डिसऑनर हुआ है, so the one who is responsible to sign the check or to issue the check is going to be liable. तो S liable होगा. सेम ही चीज है. Discuss the provision related to mode of service of summon by the court under 1. There is no mode of summon. ठीक है, वही सेम जो अपन लोग BNS के अंदर BNSS के अंदर पढ़ के हैं, that goes similarly, exactly ditto same. That is 144 के अंदर आपको by post या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के थ्रू आपको समन भेजा जाएगा. There is nothing new. Discuss the provision under 143. I hope you remember interim compensation क्या होता है. जब एक ड्रॉर के ऊपर केस स्टार्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि एक बार इतना अमाउंट तो एज अ कॉम्पनसेशन दे ही दे, और अगर एंड में ड्रॉर जीत गया तो उसको उसके पैसे वापस मिलते हैं और साथ साथ में उसको इंटरेस्ट भी मिलता है. साथ साथ में उसको इंटरेस्ट भी मिलता है. ठीक है, चलो तो अब ये चारों आंसर्स लिख लेते फट से.
डन। 1 मिनट देना दोस्तों, 1 मिनट देना। मधु आवाज दे रही है, आई बी बैक इन अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अपन फिर ये चारों लिख लेते हैं, 1 मिनट में आया। लेट्स स्टार्ट। In the present case, Mr. Mahesh draws a check of 25,000 and the same was dishonored because of insufficient balance. A plea under section 138 of negotiable instrument can only be raised if A, the payment was to pay any debt,
The check was duly presented. Notice was served to the drawer within 30 days. Dishonor. Drawer fails to pay within 15 days of notice. In the given case, since Mukesh fails to present the case within the stipulated time, the liability of Mahesh under section 138 does not arise. Hata. If the offense of 138 is committed by a company, then as per section 141, every person who at the time of offense was in charge of the management of the company shall be deemed to be guilty and be punished. Provided further, he shall not be liable if he proves that the offense was committed without his knowledge. The offense was committed without his knowledge. In the given case, Mr. S the director of R&D company himself signed the check
hence he would be liable for the offense and be punished as per section 138. Yes, Riddhi. डन है दोस्तों? ठीक है, मोड ऑफ सर्विस तो कुछ भी नहीं, फालतू का क्वेश्चन. A magistrate issuing summon to any accused or witness may order a copy of the summon to be served where the accused or witness resides or carries on business. Where an acknowledgement is received by the court or where the accused or witness refused to accept summon, the court issuing summon may declare that summon is delivered. That summon is delivered. Done. Discuss the provision of 143A repayment of amount of interim compensation. कुछ नहीं है, रीपे कर दो विद इंटरेस्ट, खत्म, इतना ही है. Where the वो तुम लिख भी रहे हो ना साथ साथ में, ऐसा तो नहीं मैं ही लिख रहा हूं, लिख तो रहे हो ना. Withdrawal of a check was made to pay any interim compensation and the same and the
Drawer was later acquitted. लिख रहा हूँ ना? And the drawer was later acquitted. Then the court shall order return of interim compensation along with interest. The other party must then return the amount and interest within prescribed period, which in any case shall not exceed 30 days. Done? Mem sheet. I hope you know that. Okay, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. हम 5 पे आ गए थे. 5 में 3 क्वेश्चंस है और 6 में 4 क्वेश्चन. 6 में तो मैं ऑब्वियसली 6A करूंगा. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, natural justice, NEFT and summary trial. This is much easier. अच्छा, ये समरी ट्रायल आपका सीआरपीसी के हिसाब से, तो ये अपने को भी करने की जरूरत नहीं है. अपन बाकी के 3 करेंगे. तो आप पहले करेंगे क्वेश्चन 6A. ठीक है. A 1 क्या है क्वेश्चन? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स. Judicial proceedings are one of the biggest source of law and
enjoy very high authority at all times and in all countries. Further, precedence can be of various types. A. Original precedent. It is a precedent which creates and applies a new rule of law. And acts as a law. एक मिनट रुकना दोस्तों से आप मेरे साथ लिखते भी शुरू हेलो चलते भी है बस आधे घंटे में सुनो ना यार आते आते वो आपको मेरा एप्स जिम पता है जिम जिम हेलो जहां मैं जिम जाता हूँ पता है ना आपको उसके जस्ट बाहर एक है ना हेल्थ कार्ड की दुकान है हाँ हेल्थ कार्ड करके वो जहाँ पे अपने कोई प्रोटीन वोटीन मिलता है ना जस्ट बाहर ही है बगल में जो दुकान है ना पारिजात के बगल में वहां जाके एक बार मेरे को पहले फोन लगाना ना यार आते आते मेरे लिए एक सप्लीमेंट लेते आओ ना हाँ सो न्यू रूल ऑफ लॉ एंड एक्ट एज अ लॉ फॉर द फ्यूचर केसेस चल 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 पार्ट पार्ट बी declaratory precedent it is merely the application of an already existing law तीसरा persuasive precedent it is a precedent which does not carry binding effect and the judges are not obliged to follow but to which they attach weight to which they attach weight as it seems necessary. D. Absolutely authoritative precedent
This is a precedent. This is a precedent which the court must follow, whether they approve of it or not, whether they approve of it or not. For instance, judgment of Supreme Court carries absolute authority over all other courts. And last is conditionally authoritative precedent which ordinarily is binding upon the court but may be disregarded if the court feels that the same is wrong. For instance, the judgment of single bench over the division bench in any high court. In any high court. Simple people, clear है? Is the time then we open our supplement sheet. A pharmaceutical company, Moon Pharma, filed a patent against a small biotech startup. The case was heard by a judge who had significant shares in Moon Pharma. Judge ruled in favor of Moon Pharma. Should Judge M have abstained himself from the case on the basis of natural justice? Yes, no one should be a judge of his own case. Admin law question, no? As per the rule of natural justice, no person should be a judge of his own case or in which he is interested, on which he is interested. It is known as the rule against bias.
It is known as the rule against bias. Where the presumption is that a person cannot take an objective decision in a case in which he is interested. Further, bias can be of three types. A. Pecuniary bias. Pecuniary bias. Where the judge has any financial interest in the matter in front of him. Irrespective of the amount being more or less. B. Personal bias. Where either of the party is a friend or relative of the judge or is in any way connected to the judge or is in any way connected to the judge. Any of this disqualifies him to act as a judge. Any of this disqualifies him to act as a judge. Subject matter bias. A judge might be biased towards the subject matter. चलो कंक्लूड करेंगे इन द प्रेजेंट केस Mr. M had significant financial interest in Moon Pharma, thereby creating a pecuniary bias
So here the judge should have the judge should have abstained himself on the basis of natural justice. On the basis of natural justice. Done मेरे शुरू. What do you understand by NEFT? ठीक है. Advantages of NEFT. ये लिख ले बेटू. NEFT allows individuals, firms, and corporates to transfer funds electronically from one bank to another without visiting the bank. Following are the advantages of NEFT. कोई 5-6 एडवांटेजेस लिख सकते हो. It's available 24/7 on all days. Available pan India. For any bank or its branch. It generally is free. Or the charges are capped by RBI. The transaction has a legal backing. No need to visit bank to receive or transfer funds. Last, near to real time settlement of funds. बस बोलो शेरो.
देख रहे हो, जहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट है अपन वहां पर अपने आंसर्स डायरेक्ट डायरेक्ट चला रहे हैं. जब क्वेश्चन केस बेस है तो मैं नंबर नहीं देखता, मैं सिर्फ उसमें देखता हूं कि मुझे कितना अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस, रैशनल और उसका एनालिसिस करना है ना. मैम शीट. ओके, नाउ दिस इज डन. आखिरी का सबमिट है सीआरपीसी के अंदर है, बीएनएस में 303 में करते हैं पहले. जंप टू क्वेश्चन 5. ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एडमिन लॉ? याद है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, फॉरेन डिसीजंस, द रूल ऑफ लॉ which gave in the book rule of law. याद है क्या? Nothing above the law, everyone has to comply with the law. A.V. Dicey. A puts a bait for his dog in the pocket and induces Z's dog to follow it. A dishonesty takes the dog out of Z's possession without Z's consent. Explain the offense. Theft किया है भाई ने, committed by under IPC. ये अच्छा देखो, इन लोगों ने ना यार ये पुराना पेपर है, तो यू नो जहां पर इन लोगों ने क्या कर दिया है कि वो आईपीसी के हिसाब से पूछा है, तो नीचे भी आईपीसी है. ये वाला तो करना ही नहीं है. आई एम सो सॉरी. टोपा, ये तो करना ही नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट डिलीट हो गया. ठीक है, तो कायदे से आईपीसी का है. चलो इसका आपको थोड़ा सा बीएनएस का प्रोविजन बता दूंगा मैं. ठीक है, हाँ अपन बीएनएस का लिख देंगे उसको. मैं उसको बीएनएस में लिखा के देता हूँ. चलो, दो नंबर के लिए एडमिन लॉ का क्वेश्चन है, तो ज्यादा नहीं करना. फॉलोइंग आर द फोर प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It is considered as the primary source of admin laws. दूसरा है acts. So acts passed by central government or state government for maintenance of peace and order, and even other laws, and even other laws become a source of admin law.
judicial decisions, the court through its various decisions on administration and setting the liability of government setting the liability of government the court through its various has acted as a very big source of admin law and D में notifications and orders issued are a big source. हेलो बात कर रहा हूँ ना मेरी हेलो मैं चिराग बोल रहा हूँ रोहन मिथिला से आप डिलीवरी करवाते ना प्रोटीन एंड सबकी भैया यार मेरे को एक बात बताओ ना अपने पास क्रिएटिन में अच्छा क्रिएटिन कौन सा पड़ा हुआ है मसल ब्लेज मत दो मेरे को मसल टेक में है अच्छा और मसल टेक के अलावा ऑन का है ठीक है इनमें कोई फ्लेवर तो नहीं आता है ठीक है ना तो क्या ऑन और मसल टेक में क्या बेटर तो ऑन ट्राई करेंगे ठीक है तो ऑन का भेज दीजिए ना कितने पैसे डालोगे उसके लिए ठीक है और सुनो ना मसल टेक नाइट्रोटेक के मल्टीविटामिन पड़े हुए हैं क्या मसल टेक के प्लैटिनम वाला वो ब्लैक और ग्रे वो भी भेज दो ना एक उसका कितना तो टोटल मैं आपको कितने डाल दूं 1953 ठीक है अभी डाल मैं इनको डाल देता हूँ ये आपको स्कैन करके भी डाल देंगे हाँ जी दोस्तों आ जाओ लड्डू कहाँ तक पहुंच गए थे अपन द रूल ऑफ लॉ एज डेवलप्ड बाय एवी डाइसी कायदे से मेरा लास्ट आंसर है बट ठीक है एक आध आंसर और लिखा दूंगा आपको
The rule of law as developed by A.V. Dicey as developed by A.V. Dicey means the principle of legality. भाई 15-20 मिनट ज्यादा पढ़ा देना बस 15-20 मिनट, मेरा बस ये लास्ट आंसर चल रहा है, इसके बाद निकलूंगा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। The rule of law as developed by A.V. Dicey means the principle of legality which states that the government of any country should be governed by the rule of law instead of rule of individual. As per A.V. Dicey, the following three are the most important principles. A. Supremacy of law. Which means that ordinary law shall always be supreme, shall always be supreme. B. Every person must be treated equally before the law. And C. Predominance of legal spirit. That is, judicial precedents must be respected and recognized while passing any order. डन मेरे शेरो। सी टेक्निकली यहां पर अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बीएनएस की स्टाइल से लिखा देता हूं और एक आप बीएनएस की स्टाइल से खुद कर लेना। वैसे मतलब कायदे से आई शुड नॉट बी राइटिंग दीज वंस, आईपीसी के हैं ये, बट ठीक है, आईपीसी का रिप्लेसमेंट बीएनएस तो वैसे आया ही है,
तो ये एक मैं करा देता हूं, ठीक है, ये एक इतू साफ कर लेना, मतलब 2 नंबर का चलेगा, 3 और 2 नंबर के हैं, मतलब 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन है, तो एक और मैं करवा दूं, आ जाओ। A puts a bait for dog in his pocket and induces Z to follow it. A takes the dog out of Z's possession without Z's consent. Explain the offense committed. Theft है. And what is the punishment? चलो, मैं बीएनएस के हिसाब से लिखा रहा हूँ, आईपीसी के हिसाब से नहीं लिखा रहा. ठीक है, 5B1. As per section 303 of the BNS, whoever dishonestly takes any property out of the possession of any person without his consent is said to commit theft. Ingredients of theft are dishonestly taking away property, it is a movable property, it is a mobile property, taken without consent. So, in the given case, Mr. A has committed theft as he dishonestly takes the dog out of Z's possession without his consent. खत्म. जमा शुरू. लो यार, ये दूसरा भी लिख ही देता हूँ, खत्म करो. चलो चलो चलो, बीएनएस के हिसाब से लिख देता हूँ इसको भी. एक्सटॉर्शन का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है. चलो मरो, लिखो.
ए थेफ्ट का पनिशमेंट पूछा है, ए व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट भी पूछा है ना, वो भी लिख देते हैं। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इज क्या 3 years फाइन है ना? और लास्ट5B2। अब मेरे को इसका सेक्शन याद नहीं आ रहा, तो आई पुट इट अप एज द as per the relevant provision of BNS 2023, whoever whoever intentionally puts any person in fear of an injury fear of an injury and thereby dishonestly induces the person to deliver any valuable property or security amidst extortion। अभी भी बीएनएस लिखो ना, ऐसे ही लिखने का, एसेंशियल्स ऑफ एक्सटॉर्शन, सेम ऊपर की डेफिनेशन से निकालने होते हैं, पर लिखना जरूर। fear of injury to person or is connected person or property inducing him to deliver the property। assign any valuable document। So in the given case, A threatened Z that he will confine his child and induced him
to sign a promissory note classically falls under the offense of extortion. खत्म. 308 है क्या? कोई बात नहीं, इतना चलता है. And with this, we come now to an end to this brilliant paper of yours. 3 घंटा 32 मिनट सेशन चला. इसमें पहले 25 मिनट अपन ने बातें की थी, तो 3 घंटा 8 9 3 घंटा 10 मिनट अपन ने लिखा. 15 मिनट रीडिंग का होता है, तो वी आर वेल विद इन 3 hours 15 minutes. जी. अच्छा, अब तुम्हारा काम क्या है? इस वीडियो पे भर भर के कमेंट करना. अगर 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 तुमने कमेंट नहीं किया तो भगवान मुझे सद्बुद्धि न दे और मैं तुम्हारा लेट्स प्लान दिसंबर 2025 ना रखूं. तो मैं इसे 15-20 मिनट लाइव छोड़ रहा हूं. फट 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 भर भर के लाइक, भर भर के कमेंट, भर भर के प्यार मोहब्बत कर दो. दिस वाज द लास्ट सेशन आई कुड हैव केप्ट फॉर JIGL. So could you please do the max so that I'm motivated enough to do something new for JIGL before your final exams. Have a great one. Jai Hind, Jai Siya Ram. Take care. Bye 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 bye.